हे गाइस, वेलकम बैक टू बिग गेम स्पॉट। तो गाइस आज हम फिर से खेलने वाले हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2। तो गाइस ऑलरेडी हमने इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, उसमें हमने काफ़ी मिशन कंप्लीट करे हैं। तो गाइस अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए जब कोई नया गेम प्ले अपलोड हो। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम बाकी के मिशन। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे ऑर्थर मॉर्गन यहाँ पर आ चुके हैं बार में। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. And that's all worth it. Pussy cat. Whatever you say. बेइज्जती कर दिया ऑर्थर की। Ain't that a nice way to talk to ले a बेटा, lady? ऑर्थर ने भी कर दी I didn't know I was बेइज्जती। talking to a lady. Excuse me. यही तरीका अच्छा है इनसे बात करने I का। must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh man, I dread to think about it. Hey! There he is. Watch where you're going. Take it Are easy, you about to pal. kiss that ले यहाँ guy? पर बिल ने आते ही लड़ाई कर दी। We have our अरे भयंकर ये तो लड़ाई होगी। गाइस अब यहाँ पर बचाना पड़ेगा अपने साथ वाले को। इसको मारेंगे पहले हम यहाँ पर। ये ले तो मर गया। ये कैसे मरा? Someone paying for the damage. Joining us, Arthur? वो क्या रहा है? अब मरा ये। समझ में नहीं आ रहा वो क्या रहा था। Arthur hit someone. वो भयंकर, ये तो कोई बहुत बड़ा गुंडा आ गया गाइस ऊपर से। इसका नाम टॉमी है। ये तो बड़ा तगड़ा सा लग रहा मुझे। अरे भयंकर, ये कौन मार दिया इसे? मारो साले। ये ले साले, इसके पास चलते गाइस। बहुत तगड़ा सा लग रहा है। ये ले साले, तो बड़ा तगड़ा सा लग रहा है गाइस। तो भयंकर, इसने तो बाहर ही निकाल के फेंक दिया। Pretty boy, you're kidding me. चले गाइस देखते हैं अब इसके साथ कैसे लड़ाई होती है। Did you see that? Yeah, you got it now. मुझे बड़ा तगड़ा सा लगा। Crack your damn skull open. You okay there, Arthur? All right. Yeah. I got this son of a... गाइस ये यहाँ पर गुंडा लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर। तभी सारे लोगों ने देखा यहाँ पर भीड़ जमा कर दी। Making a real fool of you. ये ले साले, इसने तो लेटा दिया गाइस यहाँ पर। ये ले मेन पॉइंट है। अब नहीं बचेगा ये, इसकी खैर नहीं। ले साले, ले ये खोल ले, ये खोल ले, ये खोल ले। इसका मुंह फोड़ देंगे गाइस हम यहाँ पर। Stop! Please! Please! ये कौन आ गया? I beg you, stop! Come, sir. इसकी तो You आंखें won नहीं the खुल fight रही। already. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir. But please, I beg you. गाइस यहाँ पर मुझे लगता है कि इस जगह पे टॉमी था जो बहुत तगड़ा गुंडा था, तो हमने उसको भी मार दिया। Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? ऑर्थर का मुंह सुझा दिया उसने। Quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah! Javier!
And Charles. सबका मुंह टूटा हुआ. Missed you. Charles, And Bill, Bill, looking as Javier. well as can be. सबका मुंह तोड़ दिया उसने. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. गाइस यहाँ पे शॉन के बारे में बात हो रही है. मे बी वो भी हमारा गैंग का मेंबर है और उसको बाउंटी हंटर्स ने पकड़ रखा है. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater, मे बी जो शॉन है उसको बाउंटी हंटर्स ब्लैक वाटर में लेके गए हैं. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. of course. It's you. मे बी गाइस हम शॉन को बचाने Always जाएंगे it अब. is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me? गाइस हमें कपड़े साफ करने पड़ेंगे और अपना शरीर भी साफ करना पड़ेगा. कीचड़ कीचड़ लगा हुआ पूरा. Come on. चलिए गाइस वो हमारा जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है. अब हम आगे के मिशन को कंप्लीट करेंगे यहाँ से. सबसे पहले हम जाते हैं अपने कैंप में. अभी यहाँ पर रात हो रही है तो हम अपने कैंप भी Great. घोड़े की चोट लग गई तो हम उसको रिवाइव कर सकते हैं. घोड़े को अब रिवाइव कर दिया मैंने अपने. थोड़ा टाइम लगेगा उसको स्टेबल होने में. तो हमारा घोड़ा अब सही हो चुका है गाइस. हम चलते हैं अब अपने कैंप की तरफ. जो हमारे घोड़े का स्टेमिना कोर है वो टोटली एम्प्टी हो चुका है, इसलिए घोड़ा थोड़ा गुस्सा कर रहा है. वैसे मैंने अपने कैंप को थोड़ा मार्क कर दिया है. अब मैं मुझे थोड़ा इधर उधर भटकूंगा नहीं मैं. अब मैं डायरेक्ट जो रूट मुझे दिखाया गया है उसी रूट पे जाऊंगा. अगर आप अपने जो कैंप को मार्क नहीं करते तो इतने छोटे जो साइड में मैप आता है उससे थोड़ा आपको मुश्किल होता है ढूंढना. तो इसलिए मैंने थोड़ा अपने मैप को मार्क कर दिया, कैंप को, सॉरी. मे भी हमें फीड करना पड़ेगा अपने घोड़े को.
तो गाइस जैसे कि आपने देखा हम अपने कैंप की तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम बाकी के मिशन जो है हम कंटिन्यू करेंगे। होजे के पास चलते हैं हम। Hosea, You want to go hunting? what are you hunting? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. तो मे भी हम होजे के साथ बियर को हंट करने जा रहे हैं। Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Hosea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no boat to see. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big, loudmouth bastard tried to rob me and was out riding, so well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sorta. There's a decent dealer there. We'll unload him, you can buy yourself a new horse. Put your saddle on him, let's get going. अच्छा तो गाइज ये जो ब्लैक वाला घोड़ा है इसको हम लेके जाएंगे वैलेंटाइन में बेच के नया घोड़ा हमें लेना है। सबसे पहले हम इसका सैडल निकालते हैं। Well, I guess you're right. Just let me get this off, boy. This is gonna be fun, Arthur. You won't throw me? No, he's an angel. If I'm near him. Nasty little look in his eyes. Oh, don't be rude about this magnificent creature. Okay, see if you can get your leg over that brute. Easy, big feller. All right, let's head into town. No bar fights, please. I heard about that. I'll do my best. चले गाइज अब हम चलते हैं दोबारा वैलेंटाइन। सबसे पहले हम इस घोड़े को बेचेंगे वहाँ पर। They got a good range of horse tack at the Valentine stables. Some beautiful saddles. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davy was passed out so cold we left him there, came back in the next day, and he woke up, started right back drinking again. I miss those boys. Jenny, too. She had some spark, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Just feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. He's all right. Giddy up! Morning. तो गाइज हम वैलेंटाइन पहुंच चुके हैं। अब सबसे पहले हमें वो दुकान ढूंढनी है जहाँ पर हम इस घोड़े को बेचेंगे। तो मे बी ये है वो। घोड़े को स्टेबल करके लेके जाना है हमें। Buy yourself a horse. Okay. I'm going off to the general store. Get a few things to lure that bear out with. Meet you back here in a bit. Hey, how can I help you? चले गए जब हम चलते अपने घोड़े को लेकर। With some good care, you should be able बियर to make हंटिंग में something जाना है of it. हमें। All right, let's get going. We got quite a ride ahead of us. Lead the way. So, what's this lake we're heading for? It's called O'Creagh's Run.
Up in the mountains. ये घोड़ा थोड़ा कंपैरिजन में उसके से थोड़ा पतला है और इसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी है उससे। I sure didn't figure on that. But this time we're doing the chasing. So how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Hosea. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's a code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं हम बियर हंटिंग के लिए जंगलों की तरफ जा रहे हैं। No, but no point thinking the worst. Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. गाइस हमें यहाँ पर खाना पकाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। एक खरगोश तो हमने मार दिया। चलिए गाइस उसको लेके आते हैं हम। चलिए गाइस जैसे कि हमने वो खरगोश को मार दिया था उसको हम पका के खाएंगे मे बी। All right. It's getting late. Reckon we should camp here. Sure. तो गाइस कैंप लगाना है यहाँ पर जैसे होसे ने हमें बोला। तो हमारा कैंप लग चुका है। चले गाइस तो सुबह हो चुके हैं यहाँ पर। मे बी अब बियर हंटिंग करने इस टाइम पे जाएंगे। Sure. There you go. उससे पहले हमें कॉफ़ी पी लेते हैं जो कि होसे ने बनाई है। So, what's your plan? Well, we'll see if we can track them, but we might need to lay bait to draw them out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. I'll tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains, Arthur. I was virtually weaned on bear meat. Just mix it together. Okay. It's not too hard. I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. What's the hold up here? Okay, let's go. Yep. We'll try our luck down by the water. That's where I saw him last. Okay. How's that horse treating you? So far, so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the life? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we?
Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Look for tracks, dung, bones, any sign of him. तो गाइज यहाँ पर हमें बियर का क्लू मिला है कुछ. तो इस साइड है गाइज उसके पैरों के निशान में भी. यहाँ पर और क्लू मिला है हमें. यहाँ पर हाफ ईटन फिश. मे बी वो यहाँ से मछली खा के गया होगा. Beer dump. Reckon he's got to be close. Let's keep going. Looks like the trail ends here. We lost him. तो गाइस अब कोई नामो निशान नहीं है बियर का. यहाँ से हम उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे. मैं भी देखते हैं हम यहाँ पर कुछ और तरीका अपनाते हैं उसको पकड़ने के लिए. We split up and each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which you think? तो गाइस यहाँ पर हम पे दो ऑप्शन है. या फिर हम अलग अलग हो जाएं या फिर हम यूज करें बेट को. तो मैं चाहता हूँ बेट को यूज करते हैं. Let's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead looks like a good spot for it. गाइस हमने बेट रख दिया. अब मे बी जो बियर है वो उससे अट्रैक्ट होगा. तो हम यहाँ पर इस चट्टान के पीछे छुप जाते हैं. 1,000 pounds, you say? More or less. Big scar down his face. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. तो गाइस हम अपनी बंदूक निकाल लेते हैं. यहाँ पर कभी भी भालू आ सकता है यहाँ पर. I'm fine. Let's just take a look at that bait. Sure. Come on. You only just said it, Hosea. I know, but we need to do this right. Give me a hand here. Got your knife? अरे भयंकर. Easy. तो सामने आके खड़ा हो गया. No, it's too close. क्या करें हम यहाँ पर. तो गाइस हम इसको मारते हैं यहाँ पर. क्या पता है मर जाए. होज़े के पास जाना पड़ेगा गाइस हमें. तो गाइस मैंने उसके 6-7 गोलियां मारी. वो तभी भी जाके नहीं मारा. Is he gone? You're fine, old man. Of course I'm fine. होज़े की हालत खराब हो गई. Nothing at all. Thank you. I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan, I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story.
He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming, or you gonna track that monster? Well. तो गाइस जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, या फिर मैं होजे के साथ वापस चल रहा हूँ कैंप में, या फिर मैं यहाँ पर रुकूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर रुकूंगा और भालू का शिकार करने की कोशिश करूंगा दोबारा। होजे को जाने देते हैं, यहाँ पर होजे बुढ़ा हो गया है तो उसको रुक के यहाँ पर कुछ फायदा नहीं है। अब हम यहाँ पर बियर हंटिंग करने दोबारा जाएंगे। मे बी इस बार हम क्या पता उस बियर को हंट कर दें। Must be a way off. वैसे पहले मैं अपनी जो घोड़े के पास कुछ बंदूक रखी है दूसरी वो ले लेता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं बियर हंटिंग करने। आगे हमें कुछ क्लू मिला है दोबारा। तो गाइस वो आस पास ही है बियर। देखिए यहाँ पर उसके पैर के निशान आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा झुक के चलना चाहिए। गाइस वो देखा आपने, वो सामने है वहां पर, वो देखिए। तो गाइस मैं कोशिश करूंगा उसके काफी नजदीक जा पाऊं। अरे भयंकर, ये तो जबरदस्त। गाइस इसने तो मार दिया मुझे काफी तगड़े तरीके से। गाइस जैसे कि आपने देखा मैंने इसको मार ही दिया है फाइनली। इसने बहुत तगड़े तरीके से मेरे पर अटैक करा था। खून देख रहे हो गाइस आप, ये देखिए पीठ पे देखिए निशान। काफी खतरनाक था इसका बियर का अटैक। एक बारी मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे मार देगा। तो गाइस हम अपने कैंप की तरफ जाएंगे। चलिए गाइस जो बाकी के मिशन है हम आगे जो वीडियो आएंगे उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आप दबा लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।